Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome to in this online session of the class 6 mathematics, and today we will start a new chapter of this unit number 1, that is a whole number. So yesterday in the previous lecture we discussed about the knowing our numbers. Now this chapter is over up to the end of this practice question 1 of Roman numerals. So today we will discuss about those things that is very easy for the whole numbers. So let us start, and this is a screen that displayed your supplementary book SB11. In this SB11 it gives us to the total 5 topics inside this whole numbers. First one 2.1, that is introduction part related with the whole numbers, the number lines and properties of the whole numbers and pattern in whole numbers. All these particular page numbers is given for the NCERT page number as well as the lead page. So both the books having the different page number on it. So you can also study about this chapter from the NCERT as well as from our supplementary book. So we have to cover this all the chapters whole numbers, that is from our supplementary book SB 11, 12 and 14, and some of the portions, that is our rule of board mass and bracket rule, that is covered from the SB 16. So from 11 to 16 all the pages starts from this pages to 16 page number covered whole numbers chapter. So this is the just introduction how to start these chapters, and inside that chapter which things we included, everything I put it over here. So you can also put these things in your fair book whenever you start the chapter number 2. So first you have to display the whole the topic name, which page number is included by the NCERT as well as our supplementary book. So let us start with the first points, that is displayed here, the concept time 9. That is very easy concepts here, and this concept is tell us to how to define the predecessor and the successor within the number line. So first we would like to introduce here that what do you understand about the predecessor and what is the meaning of the successor is there. So first thing is that the number that comes just before a given number, किसी भी नंबर से पहले वाला नंबर जो होता है उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं. मतलब 6, यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें 6 नंबर के आगे वाला नंबर दैट इज प्रेडिसेसर ऑफ 6 का प्रेडिसेसर होता है 5. Similar way, into successor, the number that comes just after a given number is called its successor. So after 6 के बाद वाला जो number है, that is obviously considered as its successor. So this is the very easy thing for the predecessor and successor. Predecessor just before a given number comes just before, that is predecessor, and just after a given number, that is called the successor. So both things is very important over here. Now using the number line concept in this concept time 9 is that a line with number marked at equal distance is called a number line. The numbers on number line are arranged into the ascending order. So once we have to start at any numbers, just we have to put the same distance 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So starts with the in the ascending order only. So it starts from the smaller number to bigger number. So predecessor are to left to a given number. जब predecessor की हम बात कर रहे हैं तब नंबर लाइन पे ऑलवेज लेफ्ट साइड पे होगा. मतलब 6 से 5 की तरफ अब मूव होंगे तो 5 6 का प्रेडिसेसर होगा. वैसे 6 से आगे सक्सेसर की तरफ जाएंगे तब हमें कहाँ पे मूव होना है, सक्सेसर आर टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बिकॉज इट्स अ वेरी इजी थिंग.
6 say left side, that is predecessor. 6 say right side, that is called the successor. So this is the main concept of the predecessor, successor, and how to put into the number line. So let us move on to the next one. So this is a successor and predecessor. We take it with the slide wise. So what do you understand by successor and predecessor? That is learned from your supplementary book. That is the pure definition that is given here. So let us move on it. What do you understand about this? So successor and predecessor. What numbers comes after 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो 9 के बाद क्या आएगा? Obviously 10 ही आएगा. So 10, 11, 12, 13, so on, because of it starts into the ascending order. So starts from the smaller to bigger number. So obviously 10, 11, 12 and 13. So all are the successor because of it comes after the 9. 9 के बाद आने वाले सभी नंबर को हम सक्सेसर बोलेंगे बिकॉज ऑफ द नंबर विच कम्स वन प्लेस आफ्टर ए नंबर इज कॉल्ड इट सक्सेसर. सो 9 का सक्सेसर 10, 10 का सक्सेसर 11, 11 का सक्सेसर 12, 12 का सक्सेसर 13. वैसे ही 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, सो ऑन. समझ में आ रहा है? सो दैट इज अ सक्सेसर डेफिनेशन ओवर हियर. सिमिलर वे 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 and 23. What numbers come before a 23? 23 के before number कौन सा आता है? Obviously 22 is there. So 22, 21, 20, 19, so on. So these all 22, 21, 20 and 19 all are considered as a predecessor. So this is a predecessor, and predecessor is considered that the number which comes one place before a number is called is predecessor. So the definition of successor and predecessor with the example is very easy. So let us move on to the next point. What is the predecessor of 1? Is there any such number? Predecessor का मतलब होता है left side of the 1. 1 के बाद पहले जो भी नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर बोलते हैं. तो ऑब्वियसली 1 से पहले वाला नंबर कौन सा होगा? 0 ही होगा. तो 0 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1. सिमिलर वे इनटू द नंबर लाइन, इफ वी रिप्रेजेंट हियर such kinds of the numbers, if we can arrange the number like this based on what comes before and what comes after each of them. So numbers can be arranged in the sequence on number line. So 0 1 2 3 4 5 ऐसे sequence में ही हम number line को represent करेंगे. Then after numbers can be arranged into the a sequence on a number line. Number line पे हम सभी number को कैसे arrange करेंगे? Sequence. और इसके बाद क्या होगा? Just we check it out. Now what do you understand about the number line? So just we check it out the number line after taking the predecessor and the successor. A number line, do you know what do you mean by a number line? A line with numbers marked on it an equal distance from each other is called a number line. मतलब 1 और 2 के बीच में जो distance है वही 2 और 3 के बीच में, और वही 8 और 9 के बीच में, और वही 9 और 10 के बीच में. मतलब किसी भी लाइन पे हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सभी इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ए नंबर लाइन. इज इट क्लियर? सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द नंबर लाइन हियर. नाउ डू यू नो व्हाट द एरोज ऑन बोथ द एंड रिप्रेजेंट? ये दोनों साइड पे जो एरो दिख रहे हैं आपको, राउंडेड रेड सर्कल, इट इंडिकेटिंग दैट the arrows at the end of the number line indicate that it can be extended on the both side. हम both side उसको और भी extend कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं. एरो का मतलब ही है कि it is not complete the line but it can be extended up to both of the side. So that is indicating the both of the arrows over onto the representation of the number line. Second thing is that न्यू नंबर्स कैन बी एडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द नंबर लाइन. आप 1 से आगे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब प्रेडिसेसर साइड भी ऐड कर सकते हैं, और 10 के बाद 11, 12, 13 भी ऐड कर सकते हैं. मतलब यू कैन ऐड ऑन बोथ द साइड ऑफ द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन के दोनों साइड के ऊपर आप नंबर ऐड कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस एरो इज इंडिकेटिंग दैट यू कैन एक्सटेंडेड
that number line in both side. Next one is consider that how are the numbers placed on the number line. Look at the number line given below. Do you see the order in which the number are placed? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to the 13. सो नंबर ऑन द राइट आप देख सकते हो कि जैसे आप स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जा रहे हैं, सो द नंबर ऑन द राइट साइड आर ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट. आप देख सकते हो 13 है, उससे आगे वाला नंबर 13 से छोटा होगा. 12 है, उससे आगे वाला मतलब जब आप लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे तो वो कम होगा. मतलब जैसे ही आप राइट साइड की ओर मूव हो रहे, सभी नंबर कैसे होंगे, बड़े होंगे आगे के नंबर से. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर साइड इट विल बी एक्सटेंडेड. नेक्स्ट वन इज दैट आप देख सकते हो कि 9 एंड 12 है, तो 12 इज बिगर देन द 9, 12 is greater than the 9 because of 9 is smaller than the 12, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. So 9 is less than 12 मतलब 12 से वो less है, कम है, छोटा है. So we can put like that. मतलब आप जब भी राइट साइड की ओर मूव होंगे किसी भी नंबर लाइन के ऊपर, तब आपको नंबर जो मिलेंगे वो ग्रेटर ही मिलेंगे. नेक्स्ट वन, the numbers on the right are greater than the number on the left. So 3 is the successor of the 2. आप देख सकते हो नंबर लाइन पे 3 is the successor of the 2 and 7 is the successor of 6. 6 का successor 7 है और 2 का successor है 3, क्योंकि राइट साइड के ऊपर मूव हो रहा है. सो नंबर ऑन द राइट आर ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला नंबर ऑलवेज बी ग्रेटर. So the successor of a number is to its right on a number line. मतलब कोई भी सक्सेसर, किसी भी नंबर का सक्सेसर उसकी राइट साइड पे ही होगा. तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाता है कि नंबर लाइन पे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, तब सक्सेसर जो होता है वो जो नंबर होता है उसकी राइट साइड पे होता है. 2 है तो उसका सक्सेसर 3 होगा, 3 है तो उसका सक्सेसर 4 होगा, 6 है तो उसका सक्सेसर 7 होगा. मतलब वो नंबर के राइट साइड ही आपको मूव होना है. वैसे ही प्रीडिसेसर में उसका उल्टा होगा. द नंबर ऑन द राइट आर ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट. सो 1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 2 और 6 इज प्रीडिसेसर ऑफ 5. सो ऑब्वियसली 5 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 6, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. 1 इज प्रीडिसेसर ऑफ 2, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेसर होता है वो राइट साइड होता है, तो प्रीडिसेसर ऑलवेज ऑन टू द लेफ्ट साइड. सो प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर इज टू इट्स लेफ्ट ऑन ए नंबर लाइन. तो 2 का प्रीडिसेसर उसके लेफ्ट साइड होगा, 6 का प्रीडिसेसर उसकी लेफ्ट साइड होगा. आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख सकते हो. 6 का प्रीडिसेसर 5 होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड है. 2 का प्रीडिसेसर 1 होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है. 13 का प्रीडिसेसर 12 होगा क्योंकि वो उसकी लेफ्ट साइड पे. सो दिस ऑल आर द रूल्स फॉर द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑन टू द नंबर लाइन. नेक्स्ट वन, इफ वी हैव टू फाइंड आउट the distance between two numbers on a number line. So we can find the distance between two numbers on a number line by counting up from the number. Suppose if we have to use that 4 and 9, distance between 4 and 9. तो 4 के बाद आप कैसे मूव होंगे, आपको पता है कि जैसे जस्ट वी हैव टू टेक 4, 1, 2, 3, 4 and 5. Once we reach at the 9th place, obviously how can we move 1, 2, 3, 4 and 5. तो डिफरेंस कितने होगा 4 and 9 के बीच में? 5 का. सो डिफरेंस बिटवीन 4 and 9 is 5 क्योंकि वी हैव टू मूव 5 more places when we reach up to the 9. Similar way we are going for the next. So distance, predecessor, successor, how to represent on the number line. So let us move on to the next point. So now let us move on to the practice question 2.1 to 2.3. So just we have to take it out and you also write down directly in your fair book. Fair book में भी आप लिख सकते हो सीधा. और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 to 2.3 है वो आज के होमवर्क में भी सेंड करना है.
So this one you have to write down, you have to make the practice in your rough book, and then after you have to send it as today's homework. So what do you understand about this practice question 2.1 to 2.3? So फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में देख सकते हो कि हाउ कैन वी सॉल्व आउट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 2.1. राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर्स. तो यही चीज़ आप तीन चीज़ें आज के होमवर्क में भी मुझे सेंड करना है. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर. आपको दिया गया है नंबर, एक साइड प्रीडिसेसर है और एक साइड सक्सेसर है. आपको नंबर दिया गया है 999. तो 999 के आगे वाला नंबर मतलब जस्ट बिफोर नंबर होता है 998, दैट इज अ प्रीडिसेसर ऑफ इट. एंड सक्सेसर जो होता है जस्ट आफ्टर दैट नंबर. सो 999 के बाद वाला नंबर है 1000, दैट इज द सक्सेसर ऑफ इट. सेकेंड वन नंबर आपका 2000 है. 2000 से जस्ट बिफोर है 1999 एंड जस्ट आफ्टर है 2001. इट्स अ वेरी इजी थिंग, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन टू दिस काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन. आप अपने आप रैंडम नंबर भी चूज कर सकते हो और ऐसे प्रेडिसेसर और सक्सेसर बना सकते हो. लास्ट वन है 91. 91 के पहले वाला नंबर है 90 और उसके बाद वाला नंबर है 92. सो सक्सेसर इज 92 एंड प्रेडिसेसर इज 90 of the number 91. okay, so second one is place the following numbers on the number line. आपको नंबर्स लाइन पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपको सभी नंबर को रिप्रेजेंट करना है. उसमें आपको दिया गया है 0 2 8 एंड 11. तो आप इक्वल डिस्टेंस पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो 0 पहले रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में उसका नंबर 1 होगा, फिर ये 3 4 5 देन 6 देन 7, बाद में हम 8 रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 9 फिर 10 और बाद में जो नंबर आएगा वो 11 आएगा. तो इस तरीके से हम पूरी नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. बट ध्यान यही रखना है, हमने आगे सीखा कि नंबर लाइन पे सभी नंबर इक्वल डिस्टेंस पे ही होना चाहिए. थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट which number do you think will be on the right hand side of the number line 2 3 4 5 or 2 6 7 5? राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर 2675 मतलब आपके 2345 और 2675 में राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर होगा? ऑब्वियसली 2675. जो बड़ा नंबर होगा ये दोनों में वही नंबर राइट हैंड साइड पे आएगा, जो छोटा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा. तो आपका आंसर रहेगा 2675. तो ये था पूरी एक्सरसाइज 2.1 2.2 एंड 2.3. ये आपको अपनी फेयर बुक में भी लिखना है और वही चीज़ आपको आज के होमवर्क में सेंड करना है. सो ये होमवर्क नंबर 1 याद रख लेना. दिस इज अ होमवर्क नंबर 1. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर सेट्स? सो जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट द नंबर सेट्स अबाउट. First is that the numbers that we are using counting such as 1 2 3 4 5 6 7 8, all our numbers are natural numbers. जिसको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, काउंट में यूज़ करते हैं, वो सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 to infinite. okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. so that is all are the natural numbers. Can you find the smallest natural number? Obviously that is a 1, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होगा. 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. द प्रेडिसेसर ऑफ 1 इज 0. 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर सेट. आप याद रखो 1 का प्रेडिसेसर यानी उसके जस्ट बिफोर आता वो नंबर 0 है. बट 0 कभी नेचुरल नंबर लिस्ट में नहीं होता है. मतलब 0 is neither considered as a natural numbers or any kinds of the numbers because of we are considered the 0. तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, बट 1 है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है. इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका नेचुरल नंबर. देन आफ्टर कैन यू फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? कभी हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट्स इनफाइनाइट. नो, we can add 1 to any natural number to find its successor.
उसके सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम उसमें एक ऐड कर सकते हैं, बट देर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। एक का सक्सेसर 2 होता है और 2 का सक्सेसर 3 होता है, ऐसे हम सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं, बट वी कांट फाइंड द हाईएस्ट नेचुरल नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। समझ में आया? So that is a sets of natural numbers here. Now we are going for the whole numbers, all natural numbers and zero. सभी नेचुरल नंबर और उसमें यदि हम जीरो ऐड कर दें, देन इट बिकम्स अ होल नंबर। आप देख सकते हो नंबर लाइन पे 1 से लेके बाकी सब नेचुरल नंबर है, बट यदि उसमें जीरो हमने ऐड कर दिया तो वही नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर बन जाता है। सो जीरो इज अ होल नंबर वंस इट एडेड इनटू द नेचुरल नंबर। One more things here that can you find the smallest whole number? Obviously, smallest whole number is a zero. Zero is the smallest whole number. Similar way, हम whole number का largest नहीं find कर सकते. No, because there is no any largest whole number, but we can add one to any whole number to find its successor. So there is no largest whole number here. तो जैसे नेचुरल नंबर में कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता, बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, दैट इज जीरो, सॉरी 1। वैसे ही होल नंबर में सबसे छोटा होता है वो जीरो होता है, और सबसे बड़ा नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द नॉट डिफाइनिंग इनटू द होल नंबर, बट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सक्सेसर आफ्टर एडिंग 1। तो ये हुआ आपका होल नंबर का सेट। तो just we have to take the recapping of it. Natural numbers, then all the counting numbers 1 2 3 4 5 up to 9 and so on, all the natural numbers are there, but it starts from the 1, and whole number it starts from the 0, and all the natural numbers are to be gathered. So natural number जो होता है उसमें 0 सिर्फ ऐड होता है और बाकी सब natural numbers इसमें ऐड कर देते हैं, then it becomes a whole number. So this is a concept of it. Now let us move on to the next point.